अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिलन थॉमस के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1914 में और इनकी डेथ हुई थी 1953 में। डिलन थॉमस वॉल्श ब्रिटेन में पैदा हुए। एसोसिएट करते हैं न्यू एपोकलिप्स ग्रुप के साथ। पहली पोएम इनकी पब्लिश हुई स्कूल मैगजीन में 1933 में। He dropped out of school at 16 to become a junior reporter for the South Wales Daily Report. बाद में इन्होंने ये जॉब भी छोड़ दी और अपनी राइटिंग की तरफ डिवोटेड रहे। अपनी शोहरत इन्होंने कमाई अपनी कलेक्शन 18 पोएम्स 1934 में और 25 पोएम 1936 के ज़रिए। थॉमस पब्लिश his first poetry volume Death and Entrances. This book proved to be the turning point in his career. Death and Entrances से बहुत मशहूर हुई। Thomas also wrote for radio dramas. इनका जो प्ले है अंडर मिल्कवुड ये पहली दफ़ा परफॉर्म हुआ 1953 में और पब्लिश हुआ इनकी मौत के बाद 1954 में। दिस वाज द मोस्ट फेमस वर्क ट्रांसलेटेड इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। प्ले प्रोग्रेसेस थ्रू वन स्प्रिंग डे इन द साउथ वेल सीसाइड टाउन ऑफ Liggrib and tells of dreams and desires of living and the dead of the town. Because of heavy drinking 1953 में ये मर गए। He is one of the most famous poems जो हैं Don't Go Gentle Into That Good Night। ये it was written by him for his father. His portrait of an artist as a young dog, इसके अंदर 10 स्टोरीज हैं। वो हैं The Peaches, Visits to Grandpa, Patricia, Edith and Arnold, The Fight, Extraordinary Little Calf, Just Like Little Dogs, Where Love Flows, Who Do You Wish Was With Us, Old Garbo, One Warm Saturday। मेजर वर्क्स का जिक्र करें 18 पोएम्स 1934, द मैप ऑफ लव 1939, डेथ एंड एंट्रेंसेस 1946, इन कंट्री स्लीप 1962। प्रोज कलेक्शन पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग। ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है टॉमस की 1940 में आई। क्वाइट अर्ली वन मॉर्निंग 1954, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द सी एंड अदर स्टोरीज एंड प्रोज, रिबेकास डॉटर 1965। ड्रामास का जिक्र करें अंडर मिल्क रोड रेडियो प्ले है 1954, द बीच ऑफ फाल्सिया स्क्रीन प्ले इसका रिकॉर्ड 1964 में। 25 पोएम 1936, न्यू पोएम 1943, 26 पोएम 1950, सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ थॉमस डिलन 1946, अ चाइल्ड क्रिसमस इन वेल्स 1955, Writing 1955, The Year of Love 1969, The Doctor of the Devils and Other Scripts। Sonnet इनका है The Religious Sonnets of Dylan Thomas, A Study in Imagining and Meaning 1979। न्यू एपोकलिप्टिक ग्रुप कौन सा था? The New Apocalyptic Group were a poetry grouping in UK in 1940, taking their name from the anthology The New Apocalypse 1939, edited by J.F. Henry and Henry Trace. They followed the further anthologies The White Horseman 1941 and Crown and the Sickle 1944. Their reaction against the political realism of much 30s poetry drew for sport D.H. Lawrence, Apocalypse 1934, Surrealism, Myth and Expressionism। Important members का अगर जिक्र करें A.S. फ्रेसर, एडविन मॉर्गन, डोरियन कॉक, टॉम स्कॉट, डिलन थॉमस एंड पीटर वेल्स। तो ये थे मशहूर पोएट जो कि इस मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते थे।